नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं सैफुल इस्लाम सैफ़ी और आप देख रहे हैं अहवाल दुनिया। नाज़रीन, इसराइल और फ़िलिस्तीन के दरमियान जो तशद्दुद है वो अब भी जारी है। इसराइल की जानिब से ज़ालिमाना कार्रवाई गज़ा पर अब भी हो रही है। इसी से मुताल्लिक़ कल देर रात यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की एक वर्चुअल ओपन मीटिंग बुलाई गई, जिसमें कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर देश हैं वो इसमें शिरकत की। तो नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस मुल्क का क्या स्टैंड रहा और इस पूरी मीटिंग में क्या फ़ैसला हुआ। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरी मीटिंग का इस पूरी मीटिंग में कोई फ़ैसला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने नहीं ले पाई है, यानी ये पूरी मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकला है। तो नाज़रीन, अब हम आपको ये भी बताएंगे कि किस मुल्क ने कौन सा स्टैंड लिया है। इसमें हिंदुस्तान का स्टैंड भी काफ़ी अहम माना जा रहा था कि हिंदुस्तान उन 15 देशों में से एक है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर है। तो इस वीडियो में लास्ट में हम आपको ये भी दिखाएंगे, पूरी वीडियो दिखाएंगे वर्चुअल मीटिंग की, और ये भी दिखाएंगे कि हिंदुस्तान के नुमाइंदे ने जो बात कही है वो क्या है, वो डायरेक्टली आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले जो इस मीटिंग का आगाज़ हुआ वो यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने इस मीटिंग का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि जो ये तशद्दुद है, अगर ये इस वक्त नहीं रोका गया तो आगे चलकर इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल इसको किसी न किसी तरीके से रोकना ज़रूरी है। इस मीटिंग में इसराइल और फ़िलिस्तीन का ये मसला है, इसलिए वहाँ के जो दूत है, जो वहाँ के नुमाइंदे हैं, उनको भी इसमें दावत दी गई ताकि वो अपनी बात रखें। तो इसराइल के जो नुमाइंदे थे उन्होंने कहा कि हमने अपना मन बना लिया है, इसका मतलब ये है कि अब इसराइल रुकेगा नहीं। और वो अभी तक इसराइल यही बार बार कह रहा है कि हम अपना डिफेंड कर रहे हैं, यानी हम अपने आप का बचाव कर रहे हैं। हालांकि बचाव करने में ही इसराइलियों ने 180 से ज़ायद फ़िलिस्तीनियों की जान ले ली है। वहीं जो फ़िलिस्तीन के नुमाइंदे थे रियाज मंसूर, उन्होंने कहा कि आखिर पूरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो कब आकर इस इसराइल के हमले की निंदा करेगी, इसको कंडेम करेगी। उन्होंने कहा कि 180 से ज़ायद जो है फ़िलिस्तीनियों का इंतकाल हो चुका है, वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है किसी बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने निंदा नहीं की है। अगर कोई इसराइली मारा जाता है तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता है। रियाज मंसूर ने आगे कहा कि ये दो पड़ोसी ममालिक के दरमियान की जंग नहीं है, बल्कि जो इसराइल है वो फ़िलिस्तीन पर उसने कब्ज़ा किया है और ये कब्ज़े की लड़ाई है। वहीं अब बात कर ले हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान का जो स्टैंड है वो काफ़ी अहम माना जा रहा था, और वहीं जो भक्त है वो ये समझ रहे थे कि हिंदुस्तान जो है वो इसराइल का सपोर्ट करेगा इस मामले में। लेकिन जो यूनाइटेड नेशन के हिंदुस्तान के नुमाइंदे जो दूत है TS त्रिमूर्ति ने जो बयान दिया है, उसे जो हिंदुस्तानी मीडिया है, ख़ासतौर से हिंदी मीडिया है, वो इसे दिखाने से गुरेज कर रहा है, वो खुलकर इस पर नहीं बता रहा है कि क्या उन्होंने कहा है। हम उसके कुछ मुख्य जो चीज़ें हैं वो आपको बता दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो पहले दिन इसराइल ने मस्जिद के अंदर नमाजियों के ऊपर तशद्दुद किया, हम उसकी निंदा करते हैं, वो काबिल मज़म्मत है। और वहीं उन्होंने कहा कि शेख जर्रा से जो लोगों को निकाला जा रहा है, इसकी भी हम निंदा करते हैं, यह भी काबिल मज़म्मत अमल है इसराइल की जानिब से, ये नहीं होना चाहिए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि गज़ा की जानिब से जो इसराइल पर हमले हो रहे हैं, हम उसकी भी हम निंदा करते हैं। हम किसी भी तरीके की जो तशद्दुद है हम उसकी निंदा करते हैं। वहीं उन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं कि फ़िलिस्तीन और इसराइल 2 नेशन थ्योरी के तहत रहें, यानी अपनी अपनी हदों में दोनों रहें और अपनी हदों में रहकर अपने मुल्क की खुशहाली के लिए काम करें, और जो आपस में लड़ाई है इसे बंद कर दें। लेकिन इस पूरी मीटिंग का कोई मतलब नहीं निकला है। यूनाइटेड नेशन ने कोई एक अहम फैसला नहीं ले सकी है इस पर। हालांकि यूनाइटेड नेशन का जो इस पूरे मामले में जो एक्शन है वो एग्रेसिव रूप में यूनाइटेड नेशन नहीं दिख रही है इस पूरे मामले में। अब आप सुनिए कि हिंदुस्तानी दूत जो TS त्रिमूर्ति हैं, उन्होंने इस पूरी मीटिंग में क्या कहा। Thank you, Mr. President. I thank Special Coordinator Tao Wennesland for his briefing. I also welcome all dignitaries to this open debate. The Security Council held 2 closed meetings on the developments earlier this week. In both these meetings, we had expressed our deep concern over the violence in Jerusalem, especially on Haram al-Sharif, Temple Mount during the holy month of Ramadan, and about the possible eviction process in Sheikh Jarrah and Silwan neighborhood in East Jerusalem, an area which is part of an arrangement facilitated by the UN. We had also expressed our apprehension at the spread of violence to other parts of West Bank and Gaza. Today's open debate has been necessitated by the continuing violence which began in East Jerusalem a week back and is now threatening to spiral out of control.
The events of the last several days have resulted in a sharp deterioration of the security situation. The indiscriminate rocket firings from Gaza, targeting the civilian population in Israel, which we condemn, and the retaliatory strikes into Gaza have caused immense suffering and resulted in deaths, including women and children. India has also lost one of her nationals living in Israel in this rocket fire, a caregiver in Ashkelon. We deeply mourn her demise, along with all other civilians who have lost their lives in the current cycle of violence. We reiterate our strong condemnation of all acts of violence, provocation, incitement, and destruction. Immediate de-escalation is the need of the hour, so as to arrest any further slide towards the brink. We urge both sides to show extreme restraint, desist from actions that exacerbate tensions, and refrain from attempts to unilaterally change the existing status quo, including in East Jerusalem and its neighborhood. Jerusalem has a special place in the hearts of millions of Indians who visit the city every year. It also houses the Al-Zawiya Al-Hindiya, the Indian hospice, which is a historic place associated with the great Indian Sufi saint Baba Farid and located inside the old city. India has restored this Indian hospice. The historic status quo at the holy places of Jerusalem, including the Haram al-Sharif Temple Mount, must be respected. We support the diplomatic efforts of the Quartet and other members of the international community, the countries in the region in particular, to calm the situation and put an end to the ongoing violence and seek to achieve durable peace. These incidents have once again underscored the need for immediate resumption of dialogue between Israel and Palestinian authorities. The absence of direct and meaningful negotiations between the parties is widening the trust deficit between the parties. This will only increase the chances for similar escalation in the future. We believe that every effort should be made to create conducive conditions for resumption of talks between Israel and Palestine. In conclusion, I reiterate India's strong support to the just Palestinian cause and its unwavering commitment to the two-state solution. I thank you, Mr. President.